Movies have the unique quality to touch hearts, to challenge perspectives, and inspire people into taking action. The Kerala story has undoubtedly achieved all this and more. We are privileged to begin by introducing to you the very talented team behind the Kerala story. They are here with us today, and I know you're dying to meet them. Each member has poured their heart and their soul, sweating blood, sweat, toil, and tears literally into making the movie what it really is. Their dedication and artistic vision have really brought to life this powerful story. We would like to acknowledge the production company behind the Kerala story, Sunshine Pictures Private Limited, owned by creative director and producer of the film, Vipul Amrutlal Shah. Under his banner, this remarkable film has come to fruition, showcasing his commitment to the meaningful storytelling and to social impact. Vipul Amrutlal Shah's expertise and passion have been instrumental in shaping this thought-provoking film, guiding the entire production process and bringing together a remarkable team of individuals committed to the mission and vision behind the story. Ladies and gentlemen, please welcome creative director and producer, Sunshine Pictures Private Limited and the Kerala story, Vipul Amrutlal Shah. Thank you everybody for coming here. This has been a very special film. बहुत special film है ये. जहाँ से शुरू हुई थी और जहाँ तक ये पहुँची है, मुझे लगता है एक बहुत अच्छा सफ़र गुज़रा है, लेकिन एक बहुत लंबा सफ़र अभी भी बाकी है. बहुत सारे आक्षेप भी हुए हम पे, प्रोपोगेंडा फिल्म से लेके नहीं पता नहीं क्या क्या हमें कहा गया, लेकिन ऑडियंस ने उन हर बात का जवाब दिया. ऑडियंस ने जिस तरह इस फिल्म को एक्सेप्ट किया, अप्रिशिएट किया, और जिस तरीके से लोगों ने इस फिल्म को प्यार दिया, उन्होंने उन सारे आक्षेपों का जवाब अपने आप दे दिया. लेकिन हमें ये लगता है कि हमारा काम सिर्फ फिल्म बनाना नहीं था, उससे आगे भी कुछ हमें करना था. हमारा कमिटमेंट है इन विक्टिम्स के साथ, जिनकी ज़िंदगियां बर्बाद करने की पूरी कोशिश की गई. आज हम आप लोगों को कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे भी जो इस खतरनाक ट्रैप में फंसे हैं और इस खतरनाक ट्रैप से कैसे निकले हैं, यह आप उन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे भी. एक नया इनिशिएटिव भी हम आज शुरू करना चाह रहे हैं, ताकि सिर्फ एक फ़िल्म बना के इनकी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने से आगे इस काम को लेके जाया जाए. एक बहुत बड़े नंबर ने इस फिल्म को देखा है. करीब 1.25 करोड़ लोगों ने इस फिल्म को अब तक 11 दिनों में देखा है. लेकिन हमारे देश की आबादी 142 करोड़ है और 1 करोड़ लोग उस आबादी का एक बहुत छोटा हिस्सा है. तो मुझे ये लगता है कि ये फिल्म हमारे देश के हर नागरिक को अपने फैमिली के साथ देखनी चाहिए. अभी भी अगर किसी वजह से, मैं मानता हूँ करीब 5 या 10 करोड़ लोगों ने पायरेटेड वर्जन भी देख ही लिया होगा, और मैं उन सब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने पायरेटेड वर्जन देखा भी हो तो इन लड़कियों की आवाज़ बन के आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए. ये लड़कियाँ सिर्फ केरल की नहीं है, ये पूरे भारत में चल रहा है. और अगर हम इस पे आज रिएक्शन नहीं देंगे तो शायद बहुत देर हो जाएगी, और इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सब ये फिल्म देखें और इन लड़कियों की आवाज़ बने. थैंक यू वेरी मच. Thank you, Vipul sir. Beautifully spoken, capturing the essence, but that was only a teaser. There's lots of action waiting for the rest of the evening. Ladies and gentlemen, we are honored to have with us the director of the Kerala story, Sudipto Sen. His storytelling prowess has breathed life into the entire plot and narrative. Through his direction, he has skillfully captured the essence of story and brought out some powerful performances from each of the cast. Please welcome director Sudipto Sen.
आज जिन लड़कियों की कहानी सुनाई दे रहा है आपको? हेलो। जिन लड़कियों ने हमें Time. हेलो, Yep, it's now on. Hello, check. जिन लड़कियों ने ये फिल्म बनाने के लिए हमें मजबूर किया था वो संख्या में तो बहुत है। आज कुछ हमारी बहन इधर आई हुई है, आपसे मुलाकात होगी। मैं सिर्फ एक छोटा सा इंसिडेंस बता दूं, जो बिना बताए इस फिल्म की जड़ कहाँ है वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे आपके साथ मुलाकात होगी श्रुति की, चित्रा की, अथिरा की। मैं जब पहले बार श्रुति चित्रा से मिलने गए थे, एर्नाकुलम शहर से थोड़े दूर एक छोटा सा जगह पे उनकी घर था। उस घर में बिजली नहीं थी क्योंकि बिजली काट दिया गया था। और ये लोग जब खाना बनाने के लिए सब्जी लेके आते थे, उनकी बैग छीन लिया जाता था। रात भर बिना खाए, बिना बिजली की ये लोग दिन बिताते थे। जब मैं इंटरव्यू करने गया था, ये 2015-2016 की बात है, दो दरवाज़ा की जो पार्ट है, इतना सा स्पेस था जिनमें से लाइट आ रहा था। उसी लाइट में मैंने इन लड़कियों की इंटरव्यू किया था। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी इमोशन की, इनकी खुलेपन की, इनकी आज़ादी की जिस तरह लोगों ने मिसयूज़ किए और उनको इस मुकाम में खड़ा कर दिए थे, वही था हमारी इस फिल्म बनाने की इंस्पिरेशन। तो आज हमारी दिन नहीं है, आज उन लोगों की दिन है। तो अगर आप लोगों ने जो भी रिपोर्ट करेंगे, जो भी लिखेंगे, वो कंपैशन प्लीज़ लाइएगा आपकी राइटिंग्स में, आपकी रिपोर्टिंग में। Thank you very much. Let's hear it for. Hello everyone. Thank you so much for such an overwhelming response. First of all, बहुत लोग पूछ रहे थे एक्सपेक्ट किया था या नहीं। मैंने तो नहीं किया था फॉर श्योर। एंड जैसा विपुल सर ने अभी कहा कि अच्छी बात यह है कि सिर्फ फिल्म बना के हमने उसे वहीं नहीं छोड़ दिया, आगे भी जो कुछ हम कर सकते थे वो हम कर रहे हैं। बहुत लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे कि क्या हुआ है, किसी के साथ हुआ भी है या नहीं। आई एम श्योर आधे आंसर्स आपको फिल्म देख के मिल गए होंगे, आधे आज मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। Thank you very much, Sonia. Okay, ladies and gentlemen, today we have the honor of having some real life heroes. The victims, brave individuals who have experienced situations similar to what is portrayed in the film, join us on the stage. They have graciously agreed to share their stories, offering us a glimpse into the reality that the Kerala story aims to address. It takes immense courage to stand before us, and we applaud them for their strength and their resilience. Through their experience, we hope to deepen our understanding and empathy towards those who have faced similar challenges. And let me tell you, there are thousands across the country who have faced these challenges. Their presence reminds us of the importance of not just watching movies, but actively engaging with the issues they present. Let us listen attentively to their stories and make a positive difference in the life of others. Ladies and gentlemen, please welcome on stage not just one or two, but 26 conversion survivors who we've flown in all the way from Kerala to talk about their experiences. Please welcome the real life heroes. Wondering what really is in store. And these ladies will, in their own voice, tell us what they have been through. And we applaud them for their courage. It takes courage to come forward and talk about what they have been through. And ladies and gentlemen, to tell you exactly what this entire event and the significance, I'd like to invite
back to address you, creative director and producer, Mr. Vipul Amritlal Shah. ये सारी लड़कियां बहुत बहादुर हैं, बहुत सारा खतरा उठाकर अपनी ज़िंदगी जीती हैं आज भी, और उस खतरे के बावजूद ये खुल के सामने आई हैं। उनको अपनी आवाज़ मिली है इस पिक्चर के थ्रू, और वो आवाज़ अब दबनी नहीं चाहिए, ऐसा हमें लगता है। आज हम एक इनिशिएटिव शुरू करना चाह रहे हैं जिसका नाम है प्रोटेक्ट आवर डॉटर्स। इस फिल्म का पर्पस था सेव द डॉटर्स, पर वहीं हम रुकना नहीं चाहते, हम बात को आगे ले जाना चाहते हैं, हम कुछ बदलाव चाहते हैं इनकी ज़िंदगी में। ये लड़कियां एक आश्रम बनाने की कोशिश कर रही हैं ताकि वो लोग वहाँ एक सुरक्षित और अच्छे माहौल में अपनी ज़िंदगी जी सकें। सबसे पहले मैं इनसे आमंत्रित करूंगा और ये आपको बताएंगी अपनी ज़िंदगी के बारे में भी और उस आश्रम के बारे में जो बनाना कितना ज़रूरी है और उसके लिए हम क्या करने वाले हैं। प्लीज़ आइए और अपनी बात लोगों तक रखिए। Namaste everyone. I am Shruti. I am a lifetime worker at Arsha Vidya Samajam, which is situated in Kerala, Trivandrum right now. And how I could associate with Arsha Vidya Samajam, I would like to say it first. 10 years back, I was victim of ideological conversion. And it was Arsha Vidya Samajam and Acharya Sri K.R. Manojji, the founder and director of Arsha Vidya Samajam, who brought me back to Sanatana Dharma. आर्ष विद्या समाजम क्या है और आर्ष विद्या समाजम के संस्थापन कैसे हुआ और इसका एक्टिविटीज़ के बारे में कुछ बोलने चाहती हूँ। 1999 में आर्ष विद्या समाजम का संस्थापन हुई है। आचार्य श्री के.आर. मनोज जी ने संस्थापन किए थे और इसका मिशन जो वेद ग्रंथों में लिखी हुई है, ईश्वर का वाणी होती है, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, लेट द यूनिवर्स फिल विथ नोबल वंस। ये मिशन पूरा करने के लिए, टू फुलफिल द मिशन, आर्ष विद्या समाजम इज एस्टैब्लिश्ड। ये मिशन पूरा करने के लिए कैसे करें? सनातन धर्म का पंच कर्तव्य का पालन करना चाहिए। पंच कर्तव्य मतलब सनातन धर्म का सही अध्ययन, अनुष्ठान, सही तरह की प्रचारण, अध्यापन और संरक्षण होना चाहिए। ऐसे ही हमारे कृण्वन्तो विश्वमार्यम पूरा कर सकेगा। तो इसलिए संस्थापन हुई थी आर्ष विद्या समाजम। इसके लिए 4 कोर्सेस भी तैयारी की गई। आध्यात्मिक शास्त्रम नाम से सनातन धर्म को पद परिचय से सिखाने के लिए कंपैरेटिव रिलीजन भी इसमें इंक्लूड किए गए, ताकि सनातन धर्म और दूसरी मतों के बारे में भी टर्मिनोलॉजी से लेकर एक सिस्टमैटिक स्टडीज़ करने के लिए। और भारतीय संस्कृति नाम की एक कोर्स है, टू लर्न अबाउट द रियल हिस्ट्री, कल्चरल हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, एवरीथिंग। वो असली हिस्ट्री लर्न करने के लिए, सीखने के लिए ये कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया मतलब भारतीय संस्कृति कोर्स तैयारी की गई है। और आर्ष योग विद्या यानी शिवशक्ति क्रिया योग विद्या भी सिखाने के लिए एक शिवशक्ति योगा कोर्स भी तैयारी किया गया। और स्टूडेंट्स एक्सलेंस प्रोग्राम करके फिर एक कोर्स भी है बच्चों को हमारे धर्म को और हमारे राष्ट्र की चरित्र के बारे में सीखने के लिए एक मौका देने के लिए। और ये कोर्सेस
सिखाते, हमारे समाज में श्रेष्ठता लाने की कोशिश करते ही हर एक सिचुएशन में धर्म संरक्षण करना इतना मुश्किल थी पुरानी दुनिया में। जब भगवान श्री कृष्ण परमात्मा आए थे और श्री रामचंद्र आए थे, तभी एक या दो आदमियों को मारने से धर्म संरक्षण होती थी, मगर आजकल एक या दो बल्कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल को मारने से धर्म संरक्षण नहीं होगा, बल्कि आइडियोलॉजी के साथ वार करना ही पड़ती है, जो आइडियोलॉजी विच इज़ अगेंस्ट ह्यूमैनिज्म, which is against the peace and harmony of the entire universe. So we had to do another activity, that is bringing back those who are misguided by other ideologies such which is anti-national and anti-humanism like ideologies. उस वक्त मत परिवर्तन का, मतांतरण का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारा समाज में हो रही थी। तो वहाँ उस वक्त ये हमारे कोर्स सिखाकर जो कुछ लोग हमारे धर्म से दूसरी एक आइडियोलॉजी में बिना पढ़कर कई इन्फ्लुएंस के वजह से मतांतर होने वाले थे, उन लोगों को वापस लाना, सही रास्ते में लाना एक बड़ा काम करने था। हमारा समाज तो उतनी ब्रेन वॉश्ड समाज है जितनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से, ब्लाइंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से और मिशनरी स्पिरिट से काम करने वाले मतों के लोगों से, और इसी तरह कई आइडियोलॉजी से, कई एक्टिविटीज़ से मिसगाइडेड हुए हैं, ब्रेन वॉश्ड हुए हैं। उन लोगों को डी ब्रेन वॉशिंग करके, एंटी इंडोक्ट्रिनेशन करके वापस एक सही रास्ते में लाना, एक ह्यूमन बीइंग हो तुम, ऐसे उन को समझाना वो बड़ा मुश्किल का काम होती है। ये काम भी हम करते हैं, एसोसिएटिंग विद द support and with the keeping the good relation with the other organizations in our society who all working for the betterment of our society. Arsha Vidya Samaj doing this great activity. There are lots of needs our society have, but lots of organization working to fulfill that needs. But Arsha Vidya Samajam mainly focusing on bringing or guiding the people who are becoming anti-nationals, एंटी-ह्यूमन्स, ऐसे तरह जाने वाले लोगों को वापस लाकर उन लोगों को एक अच्छा आदमी बनाने में, श्रेष्ठ व्यक्ति बनाने में फोकस करते हैं। ये तो आर्ष विद्या समाजम का काम के बारे में बोले, एक्टिविटी के बारे में बोलें तो इसी कोर्सेस सिखाकर ये एक्टिविटी कर रहे हैं। 99 से लेकर अब 2023 तक वी कुड ब्रिंग बैक more than 7,000 people to Sanatana Dharma. Among them, majority were misguided towards Islamic ideologies and that also anti-national ideologies and anti-human ideologies, we would like to say. उसमें भी majority were लव ट्रैप जिहाद में घुसकर आए हुए लड़कियां थी। तो हमारा काम तो सिर्फ केरल में नहीं, सारी दुनिया में हमारा एक्टिविटी का ज़रूरत है, क्योंकि हमारे संस्था के और आर्ष विद्या समाजम के और अब केरला स्टोरी फिल्म के रिलीज़ के बाद इतनी कॉल्स आ रही है, सिर्फ केरल से नहीं, केरल के बाहर से बोलें तो सारी दुनिया के सारे कोने से कॉल्स आ रही हैं। मम्मी पापा के पेरेंट्स के कॉल आते हैं, लड़कियों के कॉल्स आते हैं, इवन लड़कों भी कॉल करते हैं, हमें ऐसा एक प्रॉब्लम हुई है, हमारा भी एक कन्वर्शन का, फोर्सफुल कन्वर्शन का, लव ट्रैप जिहाद का और आइडियोलॉजिकल कन्वर्शन का, लैंड जिहाद का विक्टिम है। हमें भी कुछ बताना चाहते हैं मगर हमें डर लगती है बताने के लिए। आप लोग इतने courage you have and you all people are very boldly saying to the whole world that you had such experience. ये तो हमारा महत्व नहीं है,
It is not our greatness that we, some people, are able to face all you people. It is our Guruji, Acharya Shri K.R. Manojji, whose blessing, whose guidance, which made us strong enough to face this great obstacle which our society facing nowadays. This conversion is the biggest problem that we know because we had experienced it. We are witnessing several such cases in daily basis. So हमारा आश्रम का एक ज़रूरत कितना है, हमारा आश्रम विद्या समाजम का ज़रूरत कितना है, हम जो कोर्स सीखकर सनातन धर्म के ओर आए हैं इसका ज़रूरत कितना है, ये समझकर, इसका नेसेसिटी समझकर हम इस काम के लिए हमारा पूरा जीवन आगे रखे हैं. और वी आर ready to speak just because nobody should be there like Shruti or like Dr. Anakha, like Chitra Chechi or Vishali and Adira or like Akhila and all. So we should guide. We should expose what happened in our life. Then only people can understand what is happening in and around. So we are the people. We are the only people who are saving this type of the people who became witness for the ideological or love trap jihad or whatever types of jihad or conversion. This is the only institution which is focusing to bringing back those who misguided. थैंक यू वेरी मच श्रुति. और भी आप में से कोई कुछ कहना चाहे तो ज़रूर कहिए. एक बहुत बड़ी बहस चली थी, 32,003, 26 लड़कियां यहाँ हैं और अभी इन्होंने खुद कहा 7,000 का नंबर एक संस्था का. तो मुझे लगता है कि अब ये 32,003 in a very negative light when not even one redeeming person is shown from that community. As you started your talk by saying that you understood that this film is not about any religion, not Hindu, not Muslim, not Christian, anything. It is about three girls who represents the sufferings of thousands of girls, which already I think convincingly they said, and if you have any other question, you can ask them. Now coming to that iconography and the characterization. We were not here to do the balance act, you know, that thoda Hindu ko अच्छे दिखा दे, thoda Musalmano ko अच्छे दिखा दे. This was not our film. We wanted to tell the story the way it happens. Each and every word being spoken, each and every visual being shown is correct, and how far it is correct you can cross check with them. Number 2. Number 3. Our film is on terrorism. Now, the sinister plan of terrorism is been hatched against the world. Not only India, Europe is suffering, America is suffering, Australia is suffering. Now, in other countries, they have separated the terror network. When it comes to their state, the opposition and the party in power are together. Terrorism is on the one side. But unfortunately, in my country, that if been said that terrorism has no religion, but when it comes to Kerala, when we are started talking about terrorism, immediately people started talking about the religion. I think you know that the terrorists, how they misuse religion. In the name of Islam, the way Islam is being every day been smashed in Syria, Yemen, I don't think you need the example from Kerala to understand that how Islam is being misused in the world. So I think we have done the service to the religion, Islamic religion, to tell people that your religion is being misused. So you be concerned, and you will be asked, you will be surprised to know we are getting mails and messages. You can see it in the public Instagram and Twitter in the messages. The people who are abusing from the day our trailer was been released till the film is released. In these 10 days, we were flooded by abusive messages. One girl from Kerala, 21 years old girl, wrote, "Sorry bhaiya,
That was her language. Sorry, bhaiya, I have abused you last 10 days to defame my religion. After watching the film, we realized that you have done the service to the nation. And every patriotic Indian, you can go and check, I did not delete. Patriotic Indian should see the film to know that how danger we are in. So I think this iconographic that is democracy does not work or whatever you have seen in the set, it is deliberately used. The radicalization of Kerala men are reached to the dangerous level. Few days back a video came, a small 9-year-old boy sitting on the shoulder of his father was shouting the death for the Hindus and Christians. So this radicalization in Kerala has reached to that level. So I think without taking any name of any religion, we have done the service to the nation and for all these girls. I take your concern, but I would have felt more comfortable if we would have spoken about the pain of the girls. You are worried about some iconography. You're not worried about these girls getting in such a bad trap. And that's your first question. So that's the most important thing that you felt. I feel we are doing disservice to these girls and every victim by focusing on that side rather than focusing on the girls. Etc. Are given, but what a common man has doubts, it was not given by any of the scholars or I couldn't get from any sources. So slowly, as depicted in the film itself, slowly Shalini started to ask questions. Okay, if that is wrong, then what is right? They make us to ask like that. And slowly I started asking, okay, then what is right? And they started to say that Allah is the only God. No others should be worshipped other than Allah. If you worship anybody rather than Allah, you will be put in hell. The first thing they will present, they are presenting their ideology in such a way that it is the best and it is the only truth. And slowly I started asking more questions, and when they notice that we are interested, they will give more books, that is Quran translations, that is called tafsir. And also they started to share videos of Zakir Naik and M.M. Akbar and all. And actually these videos of those people made me actually, radicalized. I was radicalized to that ideology. Because I slowly, gradually, my brain was fed up with this radicalized ideology. I was becoming a dangerous girl, I must say, because I started to believe that none of the ideologies except Islam is right. And not only right, I started hating, because it is said in the Quran itself, no consideration should be given to the kafirs. I'm not at all exaggerating it. There are many verses in the Quran itself how they consider or how Allah consider kafirs. So I was keep on studying this ideology, and slowly I became a anti-Hindu. And I must say that not only anti-Hindu, I became anti-human, because my parents' tears, my family's tears was not at all bothering me. They kept on crying and fall to my feet and said, please don't go away. I started all practices that is followed by Muslim, that I was living like a Muslim woman. For about 5 years, I studied Islam, and at 2020, I was actually living like a Muslim woman. And at that time, you can just imagine, I was from a practicing Hindu family, and puja and all are going on in my home. At that time, in upstairs, I am doing namas. And my parents couldn't tolerate what I am doing. They can't even stop me by what to say. I am asking them questions and they can't answer any of them. So they couldn't stop me from anything. They could only do one thing, was cry
and say that please don't go away. And at last day, my father and mother, I'm not at all exaggerating, it was what I have gone through. My father and mother came to me and fell into my feet and said that please don't go away. If you go away, we will commit suicide. No other options left between us. So, the one who gave to birth me, the one who loved me, the one who cared for me, I told to them, anyway, you are going to die as kafirs. You are going to be put in hell. It does not bother me if you commit suicide or not. I was really rude to them. Sorry. Actually, this ideology, I must say, this ideology made me to say that because it considered kafirs as just below animals. They consider kafirs as below animals. And it is also mentioned in the Quran that if your parents are non-Muslims or disbelievers, you does not have to obey your parents, or you does not have to consider your parents as, you does not have to consider them as parents. They were taught like I was taught like that, and let you guys decide whether this ideology or this behavior is anti-nation or anti-human. You guys decide. And I was so rude that not only to my parents, even to my cousin sister's child, when at that time she was just 4, while the azan was given, I couldn't perform namas at time, and she was keep on coming to me and say, come, let's play, let's play. I got very angry, and I pushed her down. Just see, she's just 4. She's not even knowing what I am going through. Is this anti-human or what? And after 5 or 6 years of Islamic study, I was completely against others. Only Allah or Muslims are right. Is this a tolerant thinking? It is intolerance, right? And by God's grace or my family's prayers, I was able to come to Arsha Vidya Samajam and meet Acharya ji. And as Vishali ji said, the ideology which I was carrying in my head for the 6 long years, he proved me, Acharya ji proved me to be false within just 3 hours. It is the only It is only through our course, Adhyatmika Shastram course. So I must say that I was escaped just because my parents' prayers or whatever it is. But what the film showed, what strategy they tried to expose in front of public is real. Please don't say that it is some agenda or what. You are playing actually with thousands of girls' lives. Please do believe that. After coming to Arsha Vidya Samajam, I also met so many cases, and you asked how they are becoming anti-nation, right? Some of the students from US came to us, and he was highly radicalized in this ideology, and he was asking his Pakistani and Afghanistani friends that, when are you coming to attack India? Why are you not demolishing the temples in India? Is this anti-nation or what? Is this anti-human or what? Actually, I am not
saying that all Muslims are wrong or all Hindus are right or all Christians are wrong. I am not at all saying that. But this ideology surely, definitely contains some of the verses or that makes anti-human or anti-national. And we must say that a strong caucus is functioning all over the world to convert people, to radicalize them, to recruit them to this ISIS terror or any other terrorist groups. And it is a fact. And this film is actually, I must bow down before you because you have been that much sincere to that topic. And I couldn't watch the film. I watched the film actually by holding breath. I want to say that each and every scene, I want to cry loudly. Hats off to you guys. Thank you for taking this topic and exposing before the public and bringing it to the big screen. Thank you all. And also, I must thank you, my Acharyaji, my Guruji, Acharya Manojji and Arshavidya Samajam. Because of them only, I could come back to my dharma. And so many, regardless of how many threats or whatever crisis we are facing, some of them in this society, we are ready to even give or surrender our lives for saving our sisters, daughters, all them, not only girls, all them. We are ready, and once of all, thank you, everybody. Thank you very you. much. Thank you to Dr. Anagha for that very I- powerful sharing. I just want to say one thing. She became very emotional. A lot of girls here have become very emotional. They are not used to speaking in front of media. So please use your discretion when you use the speech, because I know that even, this speech can be misinterpreted. This speech can also be labeled as agenda or whatever. So please use your discretion, and she's just poured her heart out, and you can see so many other girls are getting emotional. So please be careful. Vipulji, I've been waiting for a long time. Sorry? Vipulji, my name is Bella. I'm from the Times of India newspaper. I have just one question for you. Even if we take your film at face value, we do not ask for numbers, we do not make a controversy whether it is 3 or 32,000. Does it please you somewhere in the core of your heart that you have the full backing of the government machinery in this? The state governments seem to be backing you, the central government is with you in this throughout. So this, by strange coincidence, does it seem to fit the agenda of the government, if not your agenda, if you don't have an agenda? Does that please you somewhere? I think what is very important is that this film was about, or this film is about bringing the pain of these girls to the fore, their situation to the fore. And anybody, irrespective of any party or any political ideology, anybody who wants to support their cause, forget the film. Again, I am saying, film is just one thing. Look at their lives. If anybody is ready to support their lives, their problem, we will welcome. We invite all the political parties to come together. It's not just if this topic has touched the chord of one political party, and if the other political parties don't want to feel their pain, that's their choice. But as far as we are concerned, we are welcoming all of them. We want everybody's strength to come together, and let's make this country a country clean of this menace. And for that, everybody will be required. Not one ideology or not two, everybody. So it is upon them whether they want to join the pain of these girls or no. Again, I am saying our film is nothing. It is their life. It is their pain. Let's focus on them. So all political ideologies are more than welcome to join this.
Hi, Shivani Mishra from Times Now. I personally have covered conversion Ma'am, stories this will be in the last Maharashtra. question, okay? Sure, sir. I have personally covered conversion stories in Maharashtra. Not only that it happens with girls, but also on a larger number with boys. I want to take the questions to all the 4 actresses out here that when you met the girls, the victims, whenever you went through all the studies, what was your experience? और आप जब ये मूवी अब ख़त्म कर चुके हैं, रिस्पॉन्स देख रहे हैं लोगों का, what is the different mindset that you 4 carry after the particular Kerala story? Is it on? The first time when I read the script, it was, we didn't know. Honestly, I didn't know this was happening. And the whole process, when we were doing workshops and we were reading the stories and we were watching documentaries and we were watching shows, अपनी नॉर्मल लाइफ से जो मोह होता है ना वो चला जाता है बिकॉज व्हाट दे आर गोइंग थ्रू व्हाट द पेन दे हैव फेल्ट I think we just wanted to dedicate all our energy so that when they watch this film, we do justice to it. That is all we wanted to do through this film. जैसे विपुल सर ने कहा, हम स्टार्ट में जब ये स्टोरी के बारे में पढ़ रहे थे, देख रहे थे, तब इतना नहीं पता था. कन्वर्जन्स ऑफ कोर्स सबको पता है कि होते हैं, और अगर आप अपनी खुद के चॉइस से कन्वर्ट हो रहे हो देन आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम. लेकिन फोर्स्ड कन्वर्जन्स, दैट टू अगर आपको ISIS का पार्ट या टेररिस्ट ग्रुप का पार्ट बनाया जा रहा है, ये बहुत गलत है. तो जब हम लोग स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, वी वर नम, ऑल 4 ऑफ अस. जब हमें सुदीप्तो सर ने कुछ पिक्चर्स, कुछ वीडियोस, कुछ डिटेल्स बताई थी, क्योंकि ही इज़ बीन रिसर्चिंग ऑन द टॉपिक फॉर 7 years नाउ, तो ऑफकोर्स उतनी रिसर्च हम 1 महीने में नहीं कर सकते थे. लेकिन ज़्यादातर फिल्म्स आपके कैरेक्टर के बारे में होती है कि हम कैरेक्टर कैसे प्रेप करेंगे, कैसे एक्टिंग करेंगे, कैसे उस. लेकिन ये फिल्म कहीं से भी एक्टिंग और प्रोजेक्ट वाइज नहीं था. डे 1 से उन लड़कियों के बारे में था, क्योंकि सुदीप्तो सर मेड श्योर कि जब हम उन सब के बारे में जाने तो इट वॉजेंट अ कमर्शियल प्रोजेक्ट. ऑनेस्टली स्पीकिंग, आज भी लोग पूछ रहे हैं कि 100 करोड़ हो गया, 150 करोड़ हो गया, आपको कैसा लग रहा है. ट्रस्ट मी, हम लोग सब अगर चाहते तो उतना बिजनेस हो चुका है कि आज ये सब करने का कोई पॉइंट नहीं है. लेकिन कहीं ना कहीं हम इतना अटैच्ड हैं इस प्रोजेक्ट से, वी फील सो मच अबाउट द प्रोजेक्ट कि आज भी हम लोग यहाँ पर हैं. और जैसा आपने पूछा कि पढ़ने के बाद, आई थिंक वी आर ऑल डिफरेंट पर्सन नाउ, ऑल ऑफ अस. क्योंकि हम डे 1 पे जब प्रोजेक्ट पे थे तब बहुत एक्टर वाली फीलिंग थी, पर आज हम पर्सनली बहुत जुड़े हुए हैं इस प्रोजेक्ट से, इन सब लोगों के साथ. मेरे लिए ये मेरी पहली हिंदी पिक्चर है, और ये एक सब्जेक्ट है जो एक एज एन एक्टर, एज अ प्रोफेशनल मैं बताना चाहूँगी कि एक वो स्टीरियोटिपिकल सब्जेक्ट नहीं है, हीरो हीरोइन वैसा जो हमें सोचते हैं, जिसका ड्रीम रहता है कि अरे मैं पिक्चर करूँगी तो ऐसी पिक्चर करूँगी, इसके साथ करूँगी. मगर लाइफ में ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं जहाँ ये आपसे भी एक बड़ी चीज़ है. ऐसा मौका है कि ये जो स्टोरी है वो हम चारों या जितने भी कास्ट मेंबर हैं उनके थ्रू हर एक लड़की को पहुँचे जो शायद इस चीज़ से गुज़र रही है या गुज़र चुकी हो, और उसकी अगर मदद हो सके एक भी लड़की की, तो ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी जीत है. सेकेंडली, मैं कल अपनी नानी के साथ ये पिक्चर देखने गई थी, और मेरी नानी गुजराती है, ज़्यादा हिंदी समझती नहीं है. उन्होंने बाहर आके मुझे एक बात बोली कि मुझे वो तेरा सीन बहुत सही लगा जब तूने आके अपने पापा को बताया कि आपने तो हमें कभी कुछ सिखाया ही नहीं है. जो कि मैं मानती हूँ वो बहुत बहुत ज़्यादा सच बात है, क्योंकि आज भी मैं अपनी नानी को पूछती हूँ कि ऐसा क्यों है, ये क्यों होता है, हम मंडे को क्यों व्रत रखते हैं, हम ट्यूसडे क्यों व्रत रखते हैं. वो बोलती है बस ऐसा ही है, मेरे टाइम से, उनके पापा दादा सबके टाइम से यही चला जा रहा है. तो हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जो कि इस पिक्चर से मुझे रियलाइज़ हुआ है. और एक चीज़, एक मुस्लिम लेडी आई थी कल मेरे पास, पिक्चर देखने आई थी, और आके उन्होंने मेरा हाथ शेक किया, मुझे बहुत टाइट हग किया और मुझे बोला थैंक यू कि आपने ये पिक्चर दिखाई है, क्योंकि ये पिक्चर इस्लाम को गलत नहीं बता रहा है, बट ये बता रहा है कि कुछ लोग इस्लाम को यूज़ करके
उसका कितना गलत फ़ायदा उठा रहे हैं टेररिज्म के लिए, और मैं मानती हूँ कि टेररिज्म का कोई भी रिलीजन नहीं होता है. सो यस. एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी मैं, कन्वर्जन्स के बारे में हम लोग बार बार बात कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि हम किसी कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, हम कन्वर्जन अगर करते हैं हिंदू में या सिख में या क्रिश्चियनिटी में, पॉइंट कन्वर्जन का नहीं है. ऐसा कहाँ होता है कि ISIS और टेररिज्म का पार्ट बन जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता और किसी कन्वर्जन में, क्योंकि इस फिल्म के ड्यूरेशन में ऑफ कोर्स लाइक आई सेड आपको भी अपना थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है. आई वॉज रिसर्चिंग, कन्वर्जन्स हिंदुइज्म में भी बहुत हुए हैं केरला में, लेकिन पॉइंट वहाँ पे आ रहा है कि कन्वर्ट करके आप किसी टेररिस्ट ग्रुप का पार्ट बना रहे हो, ISIS का पार्ट बना रहे हो, दैट इज़ वेयर दे आर रॉन्ग, आई फील. हाय, बिफोर वी स्टार्टेड द फिल्म, सुदीप्तो सर ने मुझे एक वीडियो दिखाया था जहाँ पे लड़कियाँ और औरतें और बच्चों को एक टैंकर में, जैसे वॉशिंग मशीन में हम लोग कपड़े स्टफ़ करते हैं ना, वैसे 16 आवर्स बाय रोड. तो दे कांट गो टू द लू, खाना नहीं खा सकते, बाथरूम नहीं जा सकते. आपको पता है वी कांट फॉर 2 आवर्स वी गेट अनकम्फर्टेबल, बट 16 आवर्स एक के ऊपर एक डम्प्ड, एंड देयर इज़ नो ऑक्सीजन फॉर देम टू ब्रीद इन इट. अभी जो लड़कियाँ वो टैंकर में जा रही है उनके तो रिकॉर्ड्स नहीं है. So in your 32,000 of those 16 that are going every day, there are no written records of that. And when you remove those bodies, जैसे हम लोग washing machine से कपड़े निकालते हैं, half those bodies are broken bones, right? Because ऐसे you've stuffed them in. So bodies with mangled bones come out. आधे मर चुके हैं, आधे जिंदे, आधे मरे. कुछ बच्चों को ऑक्सीजन नहीं मिला है तो they are half dead, half alive. तो यूज़ नहीं होंगे वो to become terrorists in the future. And जो औरतें थोड़ी तंदुरुस्त है और सेक्स स्लेव्स बन सकती हैं, उनको लिया जाता है एंड भर्ती किया जाता है ISIS कैंप में. जो बच्चे शायद बड़े होकर टेररिस्ट बन सकते हैं, वो जो आधे फॉर यूज़ नहीं है टू बिकम सुसाइड बॉम्बर्स और सेक्स स्लेव्स, उनको ऐसे ही वो रेगिस्तान में वो मर जाते हैं बिकॉज दे वोंट बी ऑफ एनी यूज़. सो देन आई थिंक अब जब हम लोगों को कोई नंबर पूछता है, एंड जैसे हमारी फिल्म में एक सीन है नीमा मैथ्यूज़ का, जो वो अपना केस रजिस्टर करने जा रही है. शी इज़ बिन रेप्ड बाय 15 to 20 people every day, and they ask her proof. अभी किसी ने आपको 15 लोगों ने आपको रेप किया, आई डोंट नो प्रूफ कैसे दोगे आप? हाउ डू यू गिव प्रूफ दैट यू हैव बिन रेप्ड continuously for a month by 15 people per day? थोड़ा मुश्किल होगा वो. शालिनी के साथ प्यार में धोखा हुआ, तो अगर प्यार में धोखा हुआ है तो वो केस कैसे रजिस्टर किया जाता है कि किसी ने प्यार में मुझे धोखा दिया? आई डोंट नो कैसे रजिस्टर किया जाता है. क्या वो काउंटेड नहीं होता? क्या रेप काउंटेड नहीं होता बिकॉज हम लोग लिख के नहीं प्रूव कर सकते हैं कि यहाँ ये पोजीशन में ये लड़के ने ये किया और वो लड़के ने उसके बाद तुरंत वो किया? कैसे लिखा जा सकता है और कैसे कंप्लेन? हाउ डज वन टेल समबडी दैट दिस इज़ द प्रूफ? आई डोंट नो. सो इतने सारे सवाल, एंड व्हेन आई मेट ऑल ऑफ दीज गर्ल्स आई सॉ कितने स्ट्रॉन्ग है ये, बिकॉज आई वॉज आस्क्ड दीज क्वेश्चंस नाउ जब भी मैं प्रमोट कर रही थी अपनी फिल्म को. एंड मैं एक एक्टर हूँ एंड मैं एक लड़की हूँ. आई कुड फील देयर पेन एज अ गर्ल, बट the questions that were asked to me, some of them I used to be like, how can you ask this? I mean, आप देख रहे हो, like there's a scene where such graphic violence हो रहा है, but you've seen are you sure about the number? Can you prove the rape, how it happened, you know? So I'm sure these girls really need a huge hand of applause for coming here and sitting here in front of you guys and being able to tell you their stories, knowing that they will be judged, knowing that they will be nitpicked, knowing that they will be asked questions that are personal, questions that are degrading, questions that are to make them feel really small, to make them feel like they're inconsequential. Because when you go through something like rape, and when you go through something like indoctrination, and when someone's messed with your mind, stripped you of your self-confidence, and then when someone makes you feel really small, they've still come here knowing that anyone could ask them anything, knowing that. So yeah, to be part of this project is, I think we are all very, very fortunate that Vipul sir and Sudeepto sir gave us this opportunity. Okay, ladies and gentlemen, we've had the ladies speak. It's a film about ladies. I think on that wonderful note, wonderful because the story is with us. It's so, so powerful.
It's about 3 women and their stories. It's about 26 and many, many more. So this story must remain with us. I'll just ask Vipulji to say just a few closing remarks before we bring this down. On behalf of the entire team of Kerala Story, मैं जो भी बोलूँगा, पहली बात तो ये है कि मुझे ये लगता है कि ये लड़कियां जो हैं, इन्होंने इतनी तकलीफ़ झेलने के बाद भी आज इतनी हिम्मत के साथ ज़िंदगी का सामना कर रही हैं. आज भी कुछ लड़कियों को अपना मुंह ढकना पड़ रहा है क्योंकि थ्रेट अभी भी उनके साथ जुड़ा हुआ है. वो अभी भी नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी रही हैं. वो अभी भी उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना हर रोज़ करना पड़ रहा है. तो हम इस फिल्म को लेके अगर हम पे सवाल उठाने, कोई बात नहीं, इट डजेंट मैटर, पर इन लड़कियों के पेन को हम हर जगह ले जाएं. और हम इस देश के हर फैमिली को फिर एक बार कहना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने ये फिल्म नहीं देखी, आप देखिए. पायरेटेड कॉपी देख के खुश मत हो जाइए, थिएटर में जाके देखिए. इन लड़कियों के लिए इतना तो हम पूरा देश मिलके कर ही सकता है. और हमें एजेंडा, प्रोपोगेंडा, पता नहीं जो जो आप कहना चाहें कह सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हमें पता है कि हमने कितनी ईमानदारी और कितनी सच्चाई से ये फिल्म बनाई है, और हम उसी सच्चाई के साथ आज इन लड़कियों के साथ खड़े हैं. मुझे लगता है फिर कोई खड़ा होकर बोलेगा ये भी हमारा एक प्रोपोगेंडा था टू क्रिएट सम काइंड ऑफ इमोशनल सिंपैथी. सो मोस्ट वेलकम. जिसको जो लिखना है वो लिख सकते हैं, जिन्हें ऐसा लगता है वो भी लिख सकते हैं. लेकिन जिन्हें इन लड़कियों का पेन रियलाइज़ होता है, मुझे लगता है आप सब में से बहुत सारे लोगों के दिलों को इन लड़कियों की बातों ने छुआ है. तो इनके कॉज को बड़ा बताइए. फिल्म को आप जितना गालियां देना चाहे दे दीजिए, लेकिन इनका कॉज ना मरे, इनका कॉज बड़ा हो और देश इस कॉज को भूले नहीं. ये अब हम सबकी जिम्मेदारी है. इतना ही कहना चाहेंगे. थैंक यू वेरी वेरी मच. आप लोग सब यहाँ आए और हमारी इतने लंबे लंबे जवाब भी आपने बहुत शांति से सुने. थैंक यू सो मच. Thank you very much, Vipulji. Ladies and gentlemen, we'd like to thank you very much. You've been an absolutely fantastic audience here. We know that you're experienced, you're responsible, and you're Just sensitive. one, Shruti wants to say something. I would like to thank the whole team for 2 things. First of all, giving us this beautiful movie. The movie succeeded in depicting what is the brainwashing system existing all over the world, not only in Kerala but all over the world. And it is succeeded in depicting what is love trap jihad is. And the movie got succeeded in depicting what the recruiting system existing in our country, which is recruiting the people towards ISIS like terrorism groups. And the movie got success in showing what the problem is and where the solution is. प्रॉब्लम क्या था शालिनी उन्नीकृष्णन का और गीतांजलि का? प्रॉब्लम धर्म सिखाए गए नहीं हैं और चरित्र के बारे में कुछ भी नहीं सिखाए गए हैं. They were not knowing what is happening in and around of both, and they could easily become prey to what the antagonist character was trying. And solution also said in the same movie also. So we all, as representatives of victim of all types of jihad, are thanking Vipulji, Sudiptoji and all the team, Adaji and all. Thank you to you, showing how those people could brainwash us, how they could inject poisonous ideologies in our brain. And thank you to showing what was our situation when
we got brainwashed. Thank you all. And we all from Arsha Vidya Samajam, thanking our father, our guru, Acharya Shri K.R. Manojji, and our second mother, Arsha Vidya Samajam, to bringing back to life, to declare in front of you, standing boldly. We had such experience. Nobody should come to this experience. No more Shruti, no more Chitra, no more Adira, no more Dr. Anagha should come. We will fight. Thank you for supporting us. Thank you. Thank you all also. We will fight. We Arsha Vidya Samajam associating, seeking help from other organizations also. Will fight against these anti-nationals. We will not allow anybody to become prey again. We will fight. Please support us. Thank you. Thank you all. Thank you very much. On that very emotional note, we'd like to thank you to every one of you. You're experienced, you're responsible, you are sensitive, and we know that if you focused on the movie before, you will now focus on the pain of these women and those like them across the country and the world. We would like to thank the entire team, the cast and crew behind the Kerala Story Sunshine Pictures, Mr. Vipul Amrutlal Shah, Mr. Sudipta Sen, Mr. Ashin Shah, Ada Sharma, Yogita Bihani, Siddhi Idani, and Sonia Balani for being here and for taking up this cause with such passion. And finally, ladies and gentlemen,